Hello everyone, my name is Aryan. I welcome you all to my podcast, The Whisper Link. Today we have Mohini with us. She is a freelance social media marketer, helping businesses and individuals to build their online presence. This podcast is about her journey of how she social media marketing and help build her personal brand on LinkedIn. So thank you Mohini for joining us for the show. Thank you for inviting me and your kind words. Okay, so Mohini, can you share your journey of like getting into social media marketing and how you started with LinkedIn and Instagram? Okay, so I started my journey 2 years back. It was like I was at the age of 18. I started कि like मेरे जो भी friends थे ना, they were doing social media marketing. So I was having an urge कि मुझे भी करना है. जो होता है ना एक urge. So I started putting all my efforts in that social media marketing. I took the courses from Coursera. You know the financial aid available. मैं अभी भी share करती हूँ courses just because I wanted those people to learn. Practical knowledge नहीं मिलती है, but theoretical बहुत मिलती है. So I just took the courses. I just learned some theoretical terms, and उन terms को use करके I figured out an internship. Internship का interview was quite tough, but I researched a lot from Google. What type of questions, especially describe about me, is the most common. How do you answer, by the way, that question? Tell me more about yourself. Like, okay, so I will just tell me about I will tell me about my like achievements, what I do, how why I applying for this job, and why I am an asset to the company. Mainly these 3 4 points I basically believe. These are Yeah, the yeah. four. And like For the first, interview generally, I believe like finding how you are asset to the company and what you are doing. These two questions yes, basically interview is finding in you. yes. And the second question which comes is what are the strengths, what are your weaknesses? So Okay. people definitely like when I was starting with the interview, I figured out the weaknesses my I have to tell my drawbacks. But after a lot of things, after a lot of interviews I've watched on YouTube, I figured out कि नहीं, weaknesses are also a kind of strength. So Okay. ये सब करके I figured out that interview, मैंने internship clear करी, and I got my first internship technically. So I got my first client there. That was Alberto Torresi. It was a shoe brand. I remember it because it was so close to my heart. So वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा. How to maintain an Instagram grid. That from that time my focus started building on Instagram social media marketing. Like social media marketing is very vast. There are multiple platforms we have to deal with. But I started with Instagram first. And that company forced me to make a LinkedIn account because वो चाहते थे कि उनके जितने भी employees हैं, they should have a LinkedIn account. So I created one. Okay, Then so I do LinkedIn marketing course. Yeah. So, what is social media marketing? Like we are in this podcast, we are going to talk about the social media marketing a lot. So, what is the social media Yeah. marketing? Social media marketing is just about your creativity. It's nothing. It's not a very big deal. It's about how you can find creativity in everything. Okay. Like, for example, you have seen multiple pages. Let's take an example of biggest page, Man Matters, or a meme page. They're all just putting creativity over there. And I'm sure somebody might be handling it. Okay. Zomato की देखिए marketing. Like Zomato काफी creative है. Zomato, Swiggy. Zomato is Exactly. काफी That's what social media marketing is. Zomato तो like मुझे लगता है marketing team काफी ज्यादा creative है Zomato की तो. मतलब मेरे को काफी अच्छे Exactly. लगते हैं उनके tweets and all. Yeah. And the Swiggy Instamart, they were doing awesome. So मतलब like social media marketing कैसे different है traditional marketing से like because बहुत ज्यादा famous है social media marketing. So how it is different Yeah. from traditional marketing? Traditional marketing is basically for old age people, like 35 years plus. Traditional marketing is newspaper में जो articles आ रहा है. And tell me honestly, आप भी newspaper पढ़ते हो? नहीं न्यूज जो है मैं On सारी daily मतलब basis. फोन नहीं पे ही ना? पढ़ता हूँ. एग्जैक्टली मैं भी नहीं पढ़ती बट सोशल मीडिया पे मैं डेली एक्टिव हूँ एटलीस्ट 2 to 3 hours तो मेरा मिनिमम इंस्टाग्राम पे जाता ही जाता है सो मतलब दैट्स व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज so Mohini, do you think like in next 20 years traditional marketing will sustain or नो everything will be कंप्लीटली नो on social media marketing? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग अब तो आप देख लो एआई भी आ गया है एआई इज गॉट देयर इज अ हाइप एआई इज गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस बट नो एआई डजंट हैव अ ह्यूमन टच
AI can do multiple things, but they can't add the human touch we want in our post. Even अगर मेरी आप LinkedIn पे भी post देखोगे, I add personal touch to it in every of the post, in every of the content. It's not just AI. AI से मैं थोड़े से idea ले सकती हूँ. But apart from that, I have to create my own post. I have to use my own words, not that common enhancement, improvement. These kind of words are ChatGPT words, and people can recognize it easily. So social media marketing is going to sustain for 100 plus years. तो मुझे लगता है लाइक चैट जीपीटी एंड गूगल जेमिनाई कांट बिकम creative content. Like if I ever use na chat Exactly. gpt or google gemini, they are not creative, they are just like a type text and all, not more than that. Yes. You can get idea from that कि हम क्या lines use कर सकते हैं, but you have to definitely reframe it, add some emotions. They can't add human emotions. They can't feel you. Okay. So how a brand build a trust on social media marketing, like on the customer ki हाँ हमारा product is best. How you use content creation strategies to build a trust if you are working with any brand. Content creation is not simply creating content. It has a lot of strategies. It has a lot of things. For example, आप कोई भी page देखते हो, there is a grid. Grid is that 3 by 9 का square. जहाँ पे हमें पता लगता है कि people are uh, getting attracted with the content. Generally वो एक eye appealing होता है. Minimalistic content. Instagram का एक rule, बहुत ही unsaid rule है. Minimalistic content होना चाहिए. बहुत ही minimalistic copies and बाकी सब कुछ visually appealing होना चाहिए. Like visuals should tell everything about the brand. Okay. As you can see, बड़े-बड़े pages, brand pages, they're not having a lot of content on their post, but they are focusing on creative part more. So why do you choose a social media marketing? Like there are several options. Like you can go with the graphic designing part or many other freelancing part. Why do you choose social media marketing? Which attract you the most about social media marketing? Social media marketing have a lot of things to do. Graphic designing is just designing the graphics, designing the visuals, even doing motion designing sometimes. Okay. And copywriting is basically about just writing copies. But social media marketing involves a lot of things. अगर हम किसी भी एजेंसी में भी काम करते हैं, social media marketer role is to coordinate with the team to schedule the post, to make the post live, to do the engagement and many more things. And social media marketing is the most interesting part. If you have creativity and अगर आप अपनी creativity को एक step आगे करना चाहते हैं to move forward, you just have to start posting your content. I would say the first step is on LinkedIn. मैंने अपना LinkedIn पे अपना एक like I remember my first post. It was a blog. I wrote my own blog, my own thoughts, and I posted it. I got 1 or 2 likes. Then I next posted is another blog, and yeah, I got more likes. And I started कि अब तो मुझे तो grow करना है. मैंने बहुत सारी posting करी. That's an interesting way to start. Like जनरली ऐसा होता है, लोग प्लान करते हैं ना कि हाँ आज से हमें लिंक्डइन पे पोस्ट करना है रेगुलरली। लाइक मैंने भी ऐसे ही किया था, मतलब कि हाँ कॉलेज स्टार्ट होने वाला था, सो लाइक मैंने कहा हाँ लिंक्डइन पे स्टार्ट करते हैं। सो मैंने पहले एक महीने प्लानिंग की, हाँ मेरे को ऐसे ऐसे पोस्ट करने हैं अगले 20-30 डेज। लाइक मेरा ऐसे नहीं था कि रैंडमली स्टार्ट किया, तो ऐसे बहुत कम होता है कि हाँ रैंडमली स्टार्ट किया, चलो अच्छा लग रहा है तो नहीं, कंटिन्यू करते हैं। मैंने बिल्कुल रैंडम स्टार्ट किया. आई वाज लाइक आई हैव टू पोस्ट इट. अब मुझे अब चाहिए कि अब तो मुझे तो ग्रो करना है. और मैंने इतना पोस्ट किया कि मेरे लाइक्स बढ़ने लगे, मेरे फॉलोअर्स आने लगे. एंड देन आई वाज लाइक नहीं, अब तो मैं पक्का फॉलोअर्स लाऊंगी. अब तो मैं पक्का एक ऐसे वैल्यू एडिंग कंटेंट क्रिएटर बनूंगी लिंक्डइन पर. So how do you decide कि कब क्या पोस्ट करना है on LinkedIn? What is the best time to post on LinkedIn or Instagram? What should someone post? इन दी स्टार्टिंग मुझे आइडिया नहीं था, बट अब मैं आपको क्लियरली बताती हूँ. एक अर्ली मॉर्निंग पोस्ट होती है जहाँ पे ना पूरी ऑडियंस एक्टिव होती है. लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम आर टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. इंस्टाग्राम पे ऑडियंस इज मोस्टली एक्टिव ऑन वीकेंड्स, बट लिंक्डइन पे एज यू माइट नो दैट इट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. तो वहाँ पे ऑडियंस ऑन वीकेंड्स पे बहुत ही कम एक्टिव होती है. तो मोस्ट एक्टिवली जो ऑडियंस होती है वो होती है अराउंड 7, जब वो ऑफ जा रहे होते हैं, जब प्रोफेशनल्स आर गोइंग टू ऑफिस और हैविंग द वर्क आवर्स. उससे पहले का जो टाइम होता है, they're definitely going to scroll down and see the LinkedIn part. Next timing comes in the afternoon.
That is around 12 to 2. And after that, the timing is around 5 to 8 or 9. Okay. So how one can learn about the social media marketing? Like we know that you have started with the social media marketing, then go on doing the internship, then now you are doing freelancing part. So how one can start with the social media marketing? You use any courses, specific First, courses which you can suggest to some? yeah, I do suggest Meta. Meta का course है Coursera पे that provides like a social media certification course. It have a 6 courses, and these 6 courses are so much valuable. And the plus point, you can even take it for free. I also take it for free. It was a very highly cost course, but I took it for free by using the financial aid. Okay. So I would recommend people to start the courses by using the financial aid. It's the best thing you can do. So like how Even one I can am promoting right now. Yeah. so how one can access the financial aid? Like what is the process? Like they used to ask you 2, 3 questions. You have to um answer it honestly why you can't afford the course, and थोड़ा सा तो overbrag करना ही पड़ेगा that you are not able to pay. But ठीक है, ये एक theory लिखकर you can go with the financial aid at 0 rupees per course. But you have to complete it with the timeline. Otherwise, you will not get the financial aid for the next courses. Okay. So Mohini, you are in college only, na? So why do you start Yes. freelancing? Like you don't have any pressure from your parents also, na? Ki, like you have to earn money in college. So क्यों start किया No, मतलब? my parents were like, you don't need to work. Why do you even work right now? But एक होता है ना passion कि यार अब तो मैंने internship कर लिया है. I want to earn from it. I want to work more and more and want to establish. So मैंने freelancing start कर दी side by side. Internship, college and freelancing. It took my whole day. Just I used to get time to for an 8 hour sleep. I sacrificed my whole fucking friend's life for that. And I would suggest कि it's not a great deal. अगर आप बाहर clubbings नहीं कर रहे हो, but you are just working on yourself, then you are getting a chance, a lot of chances. And technically, अब मैं अपने जब final year में हूँ, I have a lot of time to go out. जब 2 years मैंने अपनी life में इतना struggle किया, that I started putting efforts on my LinkedIn, on my Instagram, on my clients, and on my freelancing journey. And meanwhile, in my final year, I prepared for CAT. जो होता है ना नवंबर 2023, आई प्रिपेयर फॉर माई कैट एग्जाम. सो मैं इतना इनएक्टिव भी हो गई थी लिंक्डइन पर दैट आई डिडंट पोस्टेड कंटेंट फॉर 3 मंथ्स. इसीलिए मेरी ग्रोथ में इतना ज्यादा स्लो हुआ. लाइक आई स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन 1.5 years बैक, एंड मेरी अभी तक 14 के फॉलोअर्स हो पाए. इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मैं अभी तक अपने कंटेंट पे इतना कंसिस्टेंट नहीं थी. लेकिन अगर लेट्स सी, अब तो मैं कंसिस्टेंट हूँ. अब कितना ग्रोथ है. लेकिन या freelancing, managing college, managing internship was a tedious task. But I would say one should go for it. Because at the end, जो आपको वैल्यू मिलने वाली है ना, कि रेज्यूमे में जो वैल्यू ऐड होने वाली है वो नॉन बीटेबल है. So like parents ने कभी चिल्लाया नहीं कि अरे why you are start earning money in college? You should focus on your studies. Like वो नहीं ऐसा कभी नो, करना. आई आई वुड सजेस्ट करना चाहिए. यू हैव योर इनकम, यू हैव योर पैसिव इनकम, अ पैशन टू फॉलो. एंड धीरे धीरे ना अगर आप एक बार स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है. So how one can start freelancing? Not in social media marketing only, in general. What should be the first step? देयर आर मल्टीपल, इवन देयर आर मल्टीपल साइट्स आल्सो जहाँ पे आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फाइवर, अपवर्क, रिमोट फ्लेक्स जॉब्स एंड मल्टीपल थिंग्स. आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो. फ्रीलांसिंग भी, freelancer.com आल्सो इज अ साइट. वहां से आपको इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना. बट प्रोजेक्ट्स छोड़ के हम लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं. लिंक्डइन पे आजकल लोग इतनी हायरिंग कर रहे हैं. यू जस्ट हैव टू फॉलो द राइट ऑडियंस. जैसे आपका, इफ यू आर अ जॉब seeking person, you just have to follow HR recruiters, um, persons who are sharing job opportunities and more. So it's all about targeting the right audience. So, आपको आपका प्रोजेक्ट, आपको आपका रिक्रूटर सब मिल जाता है. so do you think like I've also done freelancing a bit in graphic designing? Do you think for a beginner, Fiverr or like any other freelancing platform work, was it so difficult to get first client on these platforms? Yeah, yeah. I would suggest अपना करना चाहिए start or do some internship. There are
multiple non-paid and paid internships. You can go for that non-paid internship. लोग कहते हैं कि नॉन पेड है, कुछ मिल नहीं रहा है, क्यों करना चाहिए? बट आई वुड सजेस्ट, जो आपको मिल रहा है ना, वो है आपकी स्किल्स। हम्म। स्किल से बेटर कुछ नहीं होता। मैंने जब अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी ना, तब मुझे फील हुआ था दैट इट इज वर्थ इट। एंड यू नो हाउ मच आई वाज गेटिंग? जस्ट 3K फॉर पर मंथ। Okay, but you are getting या to 3K। learn something. या That's the देयर biggest वर problem. लॉट टू लर्न। वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, यू गेट द न्यू एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, कलीग्स, and you get a chance to lead the team. You know, leadership is the best quality ever. When you build a team, when you manage everything, then you know you have the biggest strength. So how do you get your first client? क्या स्टोरी मेरे को जानना है। Intern, internship, नहीं internship नहीं, का था मेरा फर्स्ट क्लाइंट, बट अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशिप मेरे को लिंक्डइन पे क्लाइंट्स मिले थे। तो नहीं, मेरे को जानना है फ्रीलांसिंग में मतलब पहला क्लाइंट कैसे अप्रोच किया था। पहला क्लाइंट तो ऑब्वियसली कोल्ड मेल किया मैंने उनको, ठीक है। और मैंने उनको जो कोल्ड मेल किया, दैट वाज अ वेरी जेनेरिक वन, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे न्यूबी थी, मैंने कभी कोल्ड मेल नहीं किया था। मैंने 10 to 15 लोगों को एक साथ कोल्ड मेल किया था, जो मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे करवा सकते हैं। एंड आई क्रैक्ड वन। आई वाज सो हैप्पी कि मैंने 15-20 लोगों को मैसेज किया, एंड आई गॉट द चांस टू क्रैक वन, एंड शी वाज अ CRO। सो वहां पे मैंने कंटेंट मैनेजमेंट किया, मैंने एंगेजमेंट पे फोकस किया, एंड kudos, she was a lot happy with me. Then I started getting multiple clients. I started posting the success stories on my personal LinkedIn कि लोगों को मुझसे trust build हो. You know, social proof have a lot of value. यहाँ पे तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ. You might have seen people posting how to earn $6 lakh client. I mean, $6 lakh client. Then why were we posting on LinkedIn? Definitely, like you should have a social media manager for that only. Yeah, yeah. But okay, that's just a clickbait. Okay. Hmm. Okay, so like how one can get his first client? मतलब कैसे अप्रोच करना है क्लाइंट। कोल्ड मेलिंग एंड पोस्टिंग कंटेंट। अपनी वैल्यू, आप अपने सोशल प्रूफ्स, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इधर कुड बी लिंक्डइन, इट कुड बी इंस्टाग्राम, इट कुड बी ट्विटर। ट्विटर आल्सो हैव अ लॉट ऑफ रीच। आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन ट्विटर दीस डेज, बट ट्विटर के पास बहुत क्लाइंट्स हैं। यू कैन इवन लुक इनटू दिस प्लेटफॉर्म आल्सो। And even if you are an influencer or having a passion in photography or something, you can go for YouTube videos where you can post blogs, and mind blowing। उसके बाद तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगे ना, बट यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। एंड इन दी स्टार्टिंग आपके पास कोई लाइक्स, कोई रीच, कोई वायरल कंटेंट नहीं भी हो सकता है। देयर कुड बी सिचुएशंस व्हेन यू कैन गो आउट ऑफ योर कंटेंट, बट द ओनली मोटिवेशन इज एक टाइम के बाद इट विल ऑल बी वर्थ इट। आई वॉज ऑल्सो फीलिंग डीमोटिवेटेड मल्टीपल टाइम्स ऑन लिंक्डइन कि यार मेरे फॉलोअर्स बहुत ही स्लो ग्रो हो रहे हैं। बट अब मेरे फॉलोअर्स ना, इन 3-4 days आई एम गेनिंग 1000+ फॉलोअर्स। सो इट्स जस्ट बिकॉज अब मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ ना, तो आई फिगर्ड आउट कि कंसिस्टेंसी हैज अ वेरी ग्रेट वैल्यू। एंड पोस्टिंग रेलेवेंट कंटेंट, नॉट इररेलेवेंट। लाइक How, आई हाउ आई अर्न $6 क्लाइंट, नहीं, okay. $6 lakh क्लाइंट। सो दैट्स वेरी So how much ब्रैगिंग। time it take to get your first client? Like कितना लगा था आपको टाइम जब स्टार्ट किया उससे पहला क्लाइंट फ्रीलांसिंग। जब मैंने इंटर्नशिप छोड़ी थी ना, तब मैंने स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग। मैंने सोचा कि अब मैंने इंटर्नशिप, आई यूज्ड टू डू फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस इंटर्नशिप, एंड देन मतलब कॉलेज टाइम में मुझे लीव लेनी पड़ती थी। आई यूज्ड टू डू पार्ट टाइम जब मैं कॉलेज से वापस आती थी। तो इट वाज अ वेरी हेक्टिक थिंग, तो मेरे को लगता था मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, वरना मेरी कॉलेज स्टडीज लैक होती। लेकिन फ्रीलांसिंग मैंने आफ्टर इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी, एंड आई गॉट द क्लाइंट। आई वाज पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन साइमल्टेनियसली व्हेन आई वाज डूइंग द इंटर्नशिप। सो मुझे इतने क्लाइंट्स का मिला कि आई वाज सो हैप्पी। So like how one can build his or her portfolio on LinkedIn, like on the social media marketing कि मतलब मैंने ये काम पोर्टफोलियो, किया है। हाँ, कैसे बिल्ड कर सकते हो क्योंकि क्लाइंट तो है नहीं। या। सो सो क्या अगर कर। आपके पास, फर्स्ट स्टेप, अगर आपने कुछ क्लाइंट के साथ काम किया है, तो काम नहीं किया है, तो आप पोर्टफोलियो बना ही नहीं सकते ना। पोर्टफोलियो इट्स लाइक शोइंग योर वर्क। सो क्या अगर आपने प्रोसेस है काम लाइक। नहीं किया है, तो यू जस्ट हैव योर resume. Be honest with the client that it could be your first person, it could be your first client, and there's a first time for everything. Client will understand. सो नहीं, बट तब भी लाइक इफ someone is applying
उसे तो देखना है ना कि आपने क्या किया, लाइक कुछ भी काम, मतलब लाइक नॉट अ अगर पोर्टफोलियो आपने बट अ टेम्परेरी वर्क और टेम्पलेट टाइप, और एनी वर्क यू कैन ठीक है, शेयर. तो आपको अपना डॉक पे और कैनवा कैनवा पे देयर आर अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स। कैनवा पे आप अपना एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ एक पोर्टफोलियो बनाओ, जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स को ऐड करो, हाइपरलिंक कर दो जिन पे भी डॉक्स है, एंड शेयर इट विद योर क्लाइंट। Okay. That's the only thing. And if you have a lot of clients, I would suggest put the graphics in the Canva template. And वो Canva template is everything. आप वहाँ पे ही सब कुछ डाल सकते हो, मतलब आपको नीड ही नहीं है कोई और प्लेटफॉर्म पे जाने की। Canva is the most easy tool. Even you can see YouTube और multiple Instagram channels जहाँ पे ना इतनी सारी creativity वो Canva से करना सिखाते हैं। मैंने भी बहुत सारी Canva की उसी से सीखी। I never took a Canva course from outside. Okay. So I was a noob 2 years back, and I can say that I know a pro level Canva in 2 years. So, like you talked about the graphics and all. So, do you think like as a social media market, someone should go with the also learning about the graphic designing, typography, or anything else? ग्राफिक डिजाइनिंग हैज अ लॉट ऑफ स्कोप, और वहाँ पे फाइवर अपवर्क पे तो ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। No, like my question is this, if you are going with the social media marketing part, then you should learn या about basics of graphic designing. Is it necessary? या बेसिक्स तो नेसेसरी है। Okay. So, like, what या strategies do you use to grow on LinkedIn initially? पोस्टिंग कंटेंट क्रिएटिव, फॉलोइंग द लीडर्स। जैसे अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस थी, तो मैंने पर्सनल ब्रांडिंग लोगों को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल वेदिका भैया, लारा काउस्टा। इट वाज अबाउट फॉलोइंग द पीपल विच आई वांटेड टू फॉलो। उनका कंटेंट मुझे इतना रेजोनेट किया कि आई फील कि अगर मैं इनसे इंस्पिरेशन लूंगी ना, तो मेरा कंटेंट एकदम टॉप नॉच होगा। एंड फॉर एग्जांपल देयर इज अ जॉब recruiter, they will only connect with the people who are looking for work from home, work from office, or open to work opportunities. So it all depends to the connecting with the right people. Send a note when you were connecting with the people, and apart from that, it's all about posting consistently. I would repeat again and again, consistently is the most important thing. So, ऐसा कभी हुआ है कि like you have just get a client on LinkedIn or anywhere else and just he gets your work done and then doesn't pay you? No, I do take prepaid every time. This was my rule कि मैं prepaid के बिना काम ही नहीं करूंगी। Okay. So, how do you grow on LinkedIn? Like currently you are having like 12,000 followers. So, what's the Yeah, strategy behind it? I networking. Like I used to network with multiple people. I used to do engagement. I don't just used to post and ghost. मेरा post and ghost तो कभी भी फॉर्मूला था ही नहीं। I used to reply to every comment. Even जो मेरी पोस्ट पे ना एक बार ना 200 प्लस कमेंट्स आए थे। I was like 200 प्लस कमेंट्स पे मैं इतना सारा थैंक यू लिखूं कैसे, बट I value every comment because people are taking at least 5 seconds to comment on your post, तो उन 5 seconds की भी मैं वैल्यू करती हूँ। बिकॉज अगर आपके पास 1000 प्लस पोस्ट, जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हो उसमें से किसी ने आपके लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाला, इवन फॉर 5 seconds, to put a comment on your post, it's your duty to respond back. Okay. And LinkedIn algorithm supports those people, जहाँ पे ना आप कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं। अगर आप सिर्फ पोस्ट करेंगे एंड 15 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स प्रायर एंगेजमेंट एंड 15 to 30 मिनट्स पोस्ट एंगेजमेंट नहीं करते हैं ना, तो आपकी पोस्ट चलती भी नहीं है। So, इट्स like अ अनसेड रूल। लिंक्डइन एल्गोरिथम सपोर्ट्स दोस पीपल जो पोस्ट करने से पहले और पोस्ट करने के बाद एंगेजमेंट करते हैं। so this is for like LinkedIn only or like any other social media platform? If you talk about the इट्स फॉर Instagram, लिंक्डइन। it's for LinkedIn only. So, is there any या strategy you want to share with like for the Instagram? इंस्टाग्राम इज बेसिकली आपको अपना रील कंटेंट पे फोकस करना है, उधर तो ट्रेंडिंग कंटेंट 5 times a post, यहाँ पे फोकस करो, यू विल गेट। So, Mohini, like in general, in current scenario, we talked about like personal branding. Like many creators talk about the personal branding, importance of networking. But still, I believe like if I am also in college, I believe that students don't understand the importance of personal branding. So, what are your thoughts about it? लाइक पर्सनल ब्रांडिंग इज एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ, हैविंग योर ओन वॉइस। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी का कॉपी कंटेंट यूज कर रहे हो।
दैट्स नॉट अ गारंटी कि उसके लिए वर्क किया है तो आपके लिए भी वर्क करेगा. इट्स अबाउट पोस्टिंग ऑथेंटिक कंटेंट कि आपकी लाइफ में वहाँ पे क्या हुआ, आपने कॉलेज में क्या एक्सपीरियंस किया. इफ यू गेट द चांस टू होस्ट एन इवेंट, आप उसका पोस्ट करो. इफ यू गेट हायर scores, if you get an experience with some friends or some learning experience or some overcoming failures, you just have to post all this. People are definitely going to resonate with it. So let's move like how one can build his or like LinkedIn profile. So if we move with the description part, what should be in Yeah, the description part? Like about some you. because I have seen in LinkedIn that some people just write जो कि मतलब Paragraphs. रेलेवेंट ही नहीं है, मतलब उनके बारे में है No, बट वो people used to प्रोफेशनली. focus on people mostly used to focus on paragraphs, and मुझे लगता है paragraphs are very boring to read. तो तब भी So मतलब थोड़ा focus on bullet and points. लाइक थोड़ा Write your एक टेम्पलेट achievements, हो. write your skills and bullet and points. Okay. So can you give a Yeah. like not a proper template but कि क्या और थोड़ा डिटेल में अगर बताओ कि क्या You लिखना can check चाहिए. out my profile. Like all those who are watching it, I would suggest check out my profile and see how I have clearly jotted all the points, all the bulletin points, my services very clearly and precisely. So it's all about showing your skills precisely. I have even put a portfolio link where you can take an inspiration how I've made my portfolio and go ahead with it. So guys, Mohini also provide like guidance session for the building personal brand on social media marketing and like all. Yeah. So you can check out the profile on LinkedIn. And can you please tell more about your guidance program? Yeah. So even I have a free networking call जहाँ पे मैं अगर आपको मुझसे सिर्फ ऐसे ही कैच अप करना है और people just want to tell about themselves and I want to tell about myself and it's just a networking call तो वो एक free है 20 minutes call. Apart from that I have a LinkedIn personal branding optimization call where I will guide the people to optimize their profile. Then I have a LinkedIn profile content creation जहाँ पे लोगों को मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए बेसिक एडवाइस दूंगी कि आपको कैसे क्या करना चाहिए. इट इज अ कंसल्टेशन कॉल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव अ रिज्यूमे कोल्ड ईमेल को सीवीज कॉल जहाँ पे मैं गाइड करती हूँ कि आपको रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए. Because I have made multiple resume and I figured out that ATS score is the most important. So यहाँ मैं इस चीज पे भी फोकस करती हूँ and currently मैं बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कोर्सेज पे फोकस कर रही हूँ because I want people to focus on their skill set more. So guys, you are getting a free session on this YouTube channel only. So don't Yeah. take our guidance program. ये YouTube channel में बिल्कुल फ्री मिल रहा है Oh, बाकी का. this is so wrong. You are getting all advice on this channel only, so don't go with it. No, guys, this is just a joke. You नहीं can वहां पे बहुत अलग मिलेगा. नहीं नहीं वहां पे बहुत ज्यादा मिलने वाला है. so guys, this is just a joke. You can go with a like guidance program. It's really helpful. So Mohini, let's move to the next part. Like how one can talk with the client. If I am a social media marketer and I just book my first meeting with the client, how should I talk? Like what questions should I ask? And this is the most good question because many people suck here. यहाँ पे they used to do the scripted talk. And जहाँ पे आपने scripted किया ना वहाँ पे आपका client lose हो गया. You know, client also want to talk to a genuine person. Like आप उनके business में interested हो, वो आपकी services में interested है. The more you ask the questions, the more you get the chance to crack the deal. It's about being real and showcasing the real skills, the real client work you have done. Tell with the examples how you have grown the clients, and that's it, I would say. So like we are talking about the LinkedIn part also. So like what type of picture in the cover like one should put in profile pic and in cover pic. So file pic should be very professional. It should be very straight, or it could be like मैंने खुद अपनी straight photo नहीं लगाई है. I focused on brand color, brand tone, and the picture. जो it should be unique. Everybody is facing in front, so मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक right faced photo लगाऊं. I know I'm sounding very psycho, but ठीक है कोई नहीं. That was my way, and that even helped me get more reach. उससे सच में मेरे पास बहुत reach increase हुई when the day I changed my photo. And then I changed my banner. Banner I made it according to the colors I was having in that particular picture.
एंड जो बस होता है ना, इट शुड टेल अबाउट यू एवरीथिंग। मैंने करंटली एक गिव अवे किया था जहाँ पे मैंने बैनर ऑप्टिमाइज किया था, एंड इट वाज लाइक मैंने उसकी स्किल्स को वहाँ पे इतना अच्छे से इनहेंस किया ना, इतना अच्छे से पुट अप किया कि आई फील कि पीपल शुड फोकस ऑन बेसिकली उनका बैनर बैनर हेडलाइन और अबाउट। ये आपकी पूरी जो प्रोफाइल रिवैम्ड होती है ना, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होती है, गिव चांस कि आपका जो भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो ना, उसका फर्स्ट इंप्रेशन तो तभी बन जाता है जब आपकी प्रोफाइल ओपन करता है। एंड यू माइट हैव हर्ड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। Yeah, definitely. यू आर विजिटिंग somebody's प्रोफाइल एंड यू सी कि उसकी खुद की ऑप्टिमाइज नहीं है, तो वो आपके साथ क्यों काम करेंगे? Okay. ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। Okay, so like, or what one should add in the experience part. Like, if I am a person, मैंने starting में like not about the social media marketing, मैंने कुछ और किया था, but now I changed my niche. मैंने like engineering part से social media marketing में shift हो गया. So should I put my experience session like should I put my engineering part also? कि मैंने हाँ engineering में यहाँ job की थी या like यहाँ पे internship की थी, या I should remove या that part? इंटर्नशिप शुड बी, नहीं इंटर्नशिप आप पोस्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप डेफिनेटली आपको पोस्ट करना चाहिए, इट्स एक्सपीरियंस। No, like if I move to the social media marketing niche and I So what? It's like you experiment in multiple niche and you figure out what's best for your personality. okay, so like एक चीज होती है ना कि कोई स्टार्ट कर रहा है लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सो द मेन थिंग इज वो कंसिस्टेंट नहीं रहता. सो हाउ वन And कैन बी कंसिस्टेंट? consistent is आप अपना पहले से ही कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर दो। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट कंटेंट कैलेंडर, सो आप कर सकते हो डेली आप 15 to 20 minutes। इवन इफ यू आर गेटिंग, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, इवन यू गेट अ थॉट कि यार ओवर थिंकिंग भी हो रही है किसी चीज पर, जस्ट पुट दैट थॉट्स इन अ ब्लॉग फॉर्मेट नहीं, पोस्ट फॉर्मेट जो हम कर सकते हैं। 100 to 200 वर्ड्स, वेरी लेस। 100 to 200 वर्ड्स आर वेरी लेस, आपको बहुत इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं। इट्स जस्ट नीड अ डेडिकेशन कि हाँ आपको कंसिस्टेंट रहना है। यू माइट हैव हर्ड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपकी विल है ना पोस्ट करने की, तो आप पक्का पोस्ट करोगे, आप पक्का पोस्ट बनाओगे और आप कंसिस्टेंट रहोगे। तो आइडियाज कैसा है, लाइक मैं भी लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ बट मैं कंसिस्टेंट इसलिए ही नहीं हूँ बिकॉज आई डोंट गेट बहुत आइडियाज. सारी पोस्ट बहुत सारी पोस्ट रीड आउट करो। जितने भी क्रिएटर्स की पोस्ट आ रही है, जस्ट रीड इट आउट, व्हाट दे आर पोस्टिंग, व्हाट्स इन ट्रेंड, अभी क्या लिंक्डइन पे ज्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं, एंड देन यू हैव टू पोस्ट इट व्हाट दे आर पोस्टिंग, वन ऑफ देम, वन ऑफ दैट टॉपिक। You can take inspiration, or you can even repurpose their content. You know, Taplio is an extension, Chrome extension, जहाँ पे आप उनकी content को repurpose कर सकते हैं। Okay. So, like, if we move to the networking part, like, how one should network? Because if someone DM me and if he or she not providing any value to me, why I will respond to him or her? So, how one should Why create you will not, value? why you will not respond, even if she's your, even if she is not the one which can give you value, but she is the one who is supporting your post, who is following you and adding value to your profile now. So you should respond to them. You should respond to every person. And you should even connect with the people जो आपको follow request भेजते हैं with a simple small note, thank you for adding me to your network। इससे at least आप उनकी efforts को acknowledge तो कर रहे हो ना, acknowledgement is everything। No, like if someone is there who message me and he is not like responding to my post, not like giving a like, how I don't know him. So why would I respond? Like he's not adding any value to my like to my post, not my profile. So why and just asking Then for she, something? and then she is a irrelevant connection. Just remove her from your profile, him or her, because there's a limit to the LinkedIn connection, that is 30K. You can connect to only 30,000 people. And even if you accepted every connection request now in the starting, because लगता है ना connection request आई accept कर लेते हैं, then you are going to suffer it in the end जब आपके 30K क्रॉस हो जाएंगे, and then you want to add value with people, तो आप add ही नहीं कर पाएंगे ना, because आपका limit क्रॉस हो चुका होगा। So if someone is started, so what type of message should someone send to anyone who is like a bit upper
to his or her level. Simple language. You can even chat GPT it. आपको चैट जीपीटी पे भी चीजें मिल सकती हैं। लाइक आई वुड सजेस्ट, जो भी चीज पे आप लोग स्ट्रगल करते हैं ना, जो भी लोग स्ट्रगल करते हैं, देयर इज अ प्रॉम्प्ट फॉर एवरीथिंग। और चैट जीपीटी पे डालो, चैट जीपीटी इतना सारा कंटेंट देता है ना, इतना सारा कंटेंट करके आप इसको अपने वे में ह्यूमन टच देकर, वो आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्या उनकी प्रोफाइल में आपने कमियां निकाली, और या फिर what kind of things you feel कि आप other platform पे भी offer करते हैं। तो this is what you have to figure it out and write it on your own by using the help of chat gpt। आप ये सारी सर्विसेज, आप ये सारी चीजें chat gpt को दो, they will give you a well framed content to give them। So Mohini, we are just around the corner of ending this episode. So what was your inspiration for starting on LinkedIn and social media marketing? And what are goals ahead you are looking? My goals is reaching 100K plus followers, क्योंकि Okay. मैंने इतना consistently पोस्ट किया है ना, तो मुझे जरूरी है फॉलोअर्स होने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम लुकिंग फॉर गेनिंग मोर एंड मोर हायर टिकट क्लाइंट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल कुछ लोगों का होता है मोटिव कि वायरल होना है कंटेंट, लाइक्स रीच। नहीं, लाइक्स रीच और ठीक है, मेरा भी है कि मुझे भी लाइक्स एंड रीच सबको अच्छा लगता है, बट एट द एंड लिंक्डइन पे जो आपका मोटिव होता है ना, वो आपका अर्निंग इनकम होता है। तो जब तक आप क्लाइंट्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, या फिर इनबाउंड लीड्स आउटबाउंड लीड्स को आप ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। देयर इज अ थिंग वेयर यू शुड फिक्स योरसेल्फ एंड यू शुड लुक बैक कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। तो या आई फोकस्ड ऑन हाई टिकट क्लाइंट्स। मेरा एंड गोल तो यही है कि आई शुड गेट मल्टीपल क्लाइंट्स। आई एम So, सेटलिंग अ टीम, जहाँ पे मैंने एक टीम, अपनी ग्राफिक डिजाइनर, पार्टनर एंड एवरीथिंग, जहाँ पे मैं सेटल कर रही हूँ कि सब कुछ हो मेरे पास एंड आई कुड हेल्प विद द क्लाइंट्स। what is the one piece of advice you would give to our audience? Even if there are multiple college students, I would say start now. Start posting now on LinkedIn. LinkedIn have a lot of potential. LinkedIn is a very professional platform जहाँ पे आप अपनी कॉलेज लाइफ को ही शेयर कर सकते हो अभी। So start with it right now. It's not कि यार आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, अभी स्ट्रैटेजी नहीं है ना, वो टाइम के साथ आ जाएगी। Just start right now. Mohini, we are going to end this episode. But before ending this episode, there's a short rapid fire round. And in this Rapid rapid fire, fire. yeah. Okay. So in this rapid fire round, I will be going to ask you 4 to 5 questions, and you have to answer them as fast as possible. Okay. I'm so excited for it. Yeah, yeah, Okay. sure. So ready? Okay. Yeah. Best time to post on social media platforms. In the morning, 7 to 9 p.m., 9 a.m., and then in the afternoon and in the evening, that is around 7 to 9 for LinkedIn and 9 to 11 for Instagram. Best Better timing to form of post. content, carousels or single image. Carousels for LinkedIn and single images for Instagram. Biggest misconception about social media marketing. You need a strategy before posting in the initial stage, या फिर कि आपके पास ना likes followers स्टार्टिंग में अगर आप कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहे हो, इवन इफ द कंटेंट इज इररेलेवेंट टू द ऑडियंस, तो आपके पास लाइक्स रीच आएगी। नो, कंसिस्टेंसी डोंट प्रॉमिस यू लाइक्स रीच, इट जस्ट प्रॉमिस यू व्हेन यू आर पोस्टिंग रेलेवेंट कंटेंट। Your social media marketing journey in one word. वन वर्ड, रोलर कोस्टर। Okay. So if you ever get a chance to manage someone a social media account like a celebrity, who would it be? रणबीर कपूर। Okay. I can't find his page on Instagram. I want his page. He's my main celebrity crush and I can't find his page, so I wanted him to manage. Yeah. Okay. So guys, we are like ending with this episode. So don't forget to No, first I want to ask about you also. How do you manage your college and freelancing journey together? like I And believe I that. you're having a business also. So how you are managing everything right now at So I would say the that at the if you are motivated towards something now, if you're not doing something because of FOMO or something, then you don't need to have to manage things. You will definitely get motivation from inner you. Because if you are doing something out of FOMO, this means you are not motivated towards something. You just doing it like seeing others किया है, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं. So you are not focused on one thing.
2 दिन बाद अगर कोई और भी कुछ और कर रहा होगा तो आप वो स्टार्ट कर लोगे, सो यू आर नॉट Yeah. मोटिवेटेड। सो लाइक आई एम मोटिवेट टुवर्ड्स कि हाँ मेरे को कॉलेज में कुछ करना था, लाइक कॉलेज के 1-2 महीने पहले मेरे को था कि हाँ कुछ तो करना है मंथ। So I just started with the learning about graphic designing and all. Then I started freelancing for 4 or 5 months. Then I just started with my lead generation agency, and now I just started with the YouTube. So मुझे लगता है managing is not a big deal if you are motivated. क्योंकि then automatically you will set your priorities now, over like you will set your priority like I have to do freelancing over your parties. This is similar to your journey only, na? That you have just leave your parties with friends and all. So it's Yeah. just similar for everyone who are doing like side hustle or anything in college. Yeah. If you're doing side hustle, you have to stop your side fun. Yeah, definitely. Yeah. So Yeah. guys, please don't miss to follow Mohini on LinkedIn, and please don't Thank miss to you. subscribe to this channel and like this video, and please share this video with your friends. Thank you. Yeah. Please like, share, and comment. Okay, thank you. Thank you. Nice talking to you. And it was a really nice podcast.